Hello everyone, welcome to VRC with Gaurav. In our video solution series Road to XLRI, in this video today we are going to take a look at a DM set decision making from XAT 2022. Other relevant important questions have already been uploaded in the playlist with the same name as Road to XLRI. If you haven't gone through those, please make sure that you solve all the previous year questions that have been put there. Anyway, without any further delay, let's dive in and see what this set was all. I've labeled this set as nothing but housing issues, and I couldn't help but put this joke over here. That actually this is the scenario right now. खास करके हमारी generation में, every time I keep on coming along some meme that when we were this age, or sorry, when our parents were our age, they were able to get a home no matter how humble or not. But today housing is literally out of scope of 20s and even for a lot of people in their 30s. Anyway, let's move ahead and see what the set is about. As usual, I would recommend that you pause the video here, read the set, solve it on your own, try to have a timer running in parallel. You can use the timestamps in the description box to go to each of these three questions, jot down the answers, and then come back to this point to check whether your comprehension and whether your approach was right or not. Okay. So coming to the question, it's a fairly straightforward scenario that is painted before us. The questions are also, although large in size, but pretty doable. Hardly any moral dilemma coming in anywhere. What we are given is that there is a सरकारी company, there is a PSU जिसका R&D unit है with this long winding name, जिसको हम short में बोलेंगे FIRST का, ठीक है. So the pronunciation is also not quite easily rolling off the tongue, but क्या बात की गई है उनकी. So these guys, they are scientists, इनके employees, they assist the company in the R&D job, research and development. अभी जरूरी है उस सरकारी कंपनी को that this R&D thing, this R&D office is situated close by to the factory, and also this R&D has three levels of hierarchy: junior scientist, senior scientist, and then chief scientist. And it's necessary कि यार ये लोग थोड़ा सा पास में ही रहे, जितना close रहे तो उतनी अच्छी बात है. तो all of them have been given residence in the campus itself. ठीक है. There is one very special thing about this organization which is fairly remarkable actually, that regardless of your seniority, regardless of your position in the organization, the house that you get is similar in all aspects. ठीक है. इसके अंदर में कोई गड़बड़ नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा डैट बॉस आप तो चीफ साइंटिस्ट हो तो आपके लिए एक महल रेडी है और आप जूनियर साइंटिस्ट हो तो लो भाई एक झोपड़ी में रह जाओ. इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है. फेयर इनफ. All right, going ahead. They are given a house rent allowance, but because this campus, because this organization का office is pretty far from the main city, so of course commuting daily and all not advisable. So standard market practice है कि अगर आपके पास land है, अगर आपके पास जगह है, तो try to have as much of your staff as possible on the campus. It is a win-win scenario for everybody. Okay. Now, new recruits जो है उन लोगों को स्टूडियो अपार्टमेंट्स दिए गए. स्टूडियो अपार्टमेंट्स आर प्रीटी स्मॉल इन कंपैरिजन टू अ रेगुलर हाउस. ठीक है. वहाँ पे barely मुश्किल से like you will have a very small hall come bedroom, maybe there is a kitchen and there is a bathroom, and generally it's over there. There is no space for anything extra. ठीक है. और इन लोगों को कब तक बोला जाता है that प्लीज आप स्टूडियो अपार्टमेंट में रह लो, जब तक के वैकेंट हाउसेस प्रॉपर रेगुलर वाले दे आर नॉट अवेलेबल. ठीक है. एंड एक वेटिंग लिस्ट है, जैसे हमारा रेलवे का होता है वेटिंग लिस्ट, उस तरीके से वेटिंग लिस्ट, अ क्यू हैज बीन सेट अप. नाउ इन दिस क्यू इट्स अ सॉर्ट ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. आप जब कंपनी ज्वाइन करोगे, जब वो R&D यूनिट ज्वाइन करोगे, योर नेम विल बी ऑन द लिस्ट, बट इट विल बी एट द बॉटम कंपेयर्ड टू ऑल द अदर पीपल हु आर ऑलरेडी देयर ऑन. इट्स नॉट लाइक कि आप अगर एक सीनियर साइंटिस्ट हो या फिर आप एक चीफ साइंटिस्ट बन के ज्वाइन करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो यू विल बी गिवन एनी प्रायोरिटी विद रिस्पेक्ट टू हाउसिंग. नो, यू विल बी kept in वो वाला situation, last in last out या फिर first come first serve type situation. Your position in the organization does not matter. ठीक है. Now execution of this policy, ये decision making regarding housing, किसको क्या allot होगा, किसको कब मिलेगा नहीं मिलेगा, छोड़ना पड़ेगा, that is given in the hands of the CAO guy, chief administrator or chief administrative officer. इसका already एक boss है and that boss is also the top of the first का director. ठीक है. So the program, the process, everything seems to be set in place very nicely. Hardly any partiality का scope going on. So let's see what the situation that we are. The first situation is very straightforward, cut and dried job. Actually, there is a guy Harsh Kohli who lives in a house number 324. But इनकी मदर इन लॉ है जो अकेले रहती है, और काफी टाइम से हर्ष ने रिक्वेस्ट डाल के रखा है कि मुझे प्लीज मेरे मदर इन लॉ के जितने आसपास में आप हाउस अलॉट कर सको तो मुझे कीजिए.
ठीक है। रिसेंटली, और ये काफी टाइम से है, बाय द वे रिक्वेस्ट इट इज रिटन ओवर हियर अ फ्यू इयर्स बैक, तो काफी टाइम से ये रिक्वेस्ट इज पेंडिंग बिफोर द सीएओ गाय। ठीक है, ऑलराइट। नाउ रिसेंटली हाउस नंबर 224 गॉट वैकेंट एंड व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट, इट इज जस्ट बिसाइड इसकी मदर इन लॉ का हाउस, हाउस नंबर 225। तो ओके, इट्स लाइक मदर इन लॉ को घर को जो चिपक के दूसरा घर रहेगा, दैट गॉट वेकेंट एंड हर्ष अपील टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कि सर प्लीज मुझे ये दे दिया जाए। ओके, now the CA guy takes a look at the waiting list कि किस किस को घर अलॉट करना है। तो currently it's 5 people are in waiting and there is this guy soft Tangud या फिर Tangud, I don't know how to pronounce this, he is on top of the queue। तो हमारे सामने सिचुएशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रखी गई है कि CAO के सामने दो सिचुएशन है, सॉफ्ट टांगोड को घर देना है और मिस्टर हर्ष कोहली इज रिक्वेस्टिंग कि मुझे घर नंबर 224 दे दो। तो अभी बेस्ट एक्शन क्या लेना चाहिए सीएओ ने, और उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है, दैट ही कैन नॉट वायलेट द एग्जिस्टिंग हाउसिंग पॉलिसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑलवेज हैव टू टेक इनटू अकाउंट द कंडीशंस व्हिच इज मेड मैंडेटरी बाय द क्वेश्चन। इंडिविजुअल क्वेश्चंस, इंडिविजुअल आपको कंस्ट्रेंट, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट दिए जाएंगे। समटाइम्स इट माइट बी गिवन कि फेयर इनफ सोल्यूशन निकालो which may involve bending the existing policies, तो वो अलग सिचुएशन हो जाती है, बट यहाँ पे वायलेट नहीं कर सकते। सो इन दिस केस इट इज वेरी क्लियर, घर वेकेंट हुआ है एक, और सॉफ्ट अंगूर को घर दिया जाना चाहिए। सो वन थिंग इज वेरी मैंडेटरी, दैट सॉफ्ट शुड गेट अ हाउस 100%। अब वो कैसे दिलाते हैं, ये ही तो अभी काम है उस सीएओ गाय का। ओके जी, ओके। तो व्हाट आर द ऑप्शंस बिफोर अस? द ऑप्शंस आर allot house number 224 to Sof and asking Harsh to negotiate a possible swap with Sof. Not quite okay। यहाँ पे क्या हो गया, झगड़े की एक गुंजाइश तैयार हो गई है, और आपका जो ये इतना पुराना एम्प्लॉय है हर्ष कोहली, जिसने एक बहुत ही फेयर इनफ रिक्वेस्ट किया है, बरसों से उसका रिक्वेस्ट पेंडिंग है, एंड ही इज रिक्वेस्टिंग प्लीज मुझे दूसरा घर अलॉट कर दो। इट्स नॉट एज इफ ही इज आस्किंग मुझे लग्जूरियस घर चाहिए, मैं इतने सालों से खराब घर में रह रहा हूँ। इट इज गिवन टू अस दैट ऑल द हाउसेज आर सिमिलर इज लिटरली इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो आप बेमतलब हर्ष कोहली को क्यों नाराज कर रहे हो बाय जस्ट फॉलोइंग द लेटर ऑफ द लॉ एंड लिविंग हर्ष टू डील विद हिज मिसफॉर्च्यून ऑन हिज ओन? तो नॉट क्वाइट अ गुड ऑप्शन। तो आपका मतलब सीएओ गाय का जो पोजीशन है, जो रोल है, फिर उसने करके ही क्या दिखाया? ही हैज लिटरली बिहेव्ड लाइक अ रोबोट इफ ही गोस फॉर ए। ओके, बी, ask Harsh to join the queue because scientists in the queue should be given priority. This is not at all valid. हर्ष कोहली इज नॉट आस्किंग फॉर एन एडिशनल होम। हर्ष कोहली इज नॉट अ न्यू रिक्रूट कि भाई उसको आप क्यू में नीचे डाल दोगे, वो एग्जिस्टिंग है, उसके पास में घर है, इज लिटरली जस्ट आस्किंग फॉर अनदर। तो द आंसर ऑप्शन इज एक्चुअली वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस केस। एक्सचेंज कर दो ना, सॉफ्ट को बोल दो कि भाई आप हर्ष के घर में चले जाओ, और हर्ष को बोलो कि भाई जल्द से जल्द खाली कर घर एंड टेक 224 इन रिटर्न। तो दिस इज अ सिचुएशन व्हिच इज वेरी विन विन। आपने आपने कोई हाउसिंग पॉलिसी वायलेट नहीं की क्योंकि सॉफ्ट को घर मिल जा रहा है, एंड हर्ष इज ऑल्सो गेटिंग हिज रिक्वेस्ट फुलफिल्ड। ठीक है, एग्जिस्टिंग घर छोड़ दिया, 224 पे मूव हो गए, नुकसान तो कुछ नहीं है ना, एग्जैक्ट सेम घर मिल रहा है उसे जो उसका ऑलरेडी था। ही जस्ट लिटरली हैज टू टेक हिज फर्नीचर एंड मूव देयर। तो डू वी हैव एन ऑप्शन? yes we do, so answer option D becomes very very straightforward. So this was actually hardly a dilemma type situation, it was just 2 plus 2 equal to 4 type situation। ठीक है, ऑप्शन सी इज अननेसेसरीली हार्श, यू हैव टू थ्रो इट आउट। इंसान हर्ष ने बहुत लेजिट रिक्वेस्ट किया है, उसने कोई लग्जरी वाली चीज नहीं मांगी है दैट यू कैन डिनाई। ओके, ऑप्शन बी इज आल्सो एब्सर्ड बिकॉज ही इज नॉट अ न्यू रिक्रूट एंड आस्किंग फॉर अ ब्रांड न्यू होम। एंड ई, create a separate queue for existing residents, extent meaning existent, ठीक है, surviving residents, and give them the first right to receive। this is like मैं what क्यों, क्या मतलब आपको एक न्यू पॉलिसी क्यों क्रिएट करनी है? दिस इज जस्ट वन स्पेशल सिनेरियो एंड इट कैन बी हैंडल्ड एज इजीली एज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन ई इज अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड, टिक इट आउट। ठीक है, तो चलो, आई होप दैट यू गॉट दिस क्वेश्चन करेक्ट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नॉनदलेस इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड क्वेश्चन हल्का सा मोर चैलेंजिंग, मोर डिमांडिंग। यू हैव अनदर गाय रॉन्ग रिक्रूट, ओके, वेरी अनयूजुअल नेम। ही हैज जॉइन्ड द ऑर्गेनाइजेशन वेरी रिसेंटली, ठीक है जी, एंड उसका पोजीशन है क्यू में थर्ड। द गाय हैज अनफॉर्चुनेटली एलिंग पेरेंट्स एंड ही कैनॉट हाउस देम इन द स्टूडियो अपार्टमेंट जो उसे मिला है। हमें दिया गया है कि अगर जब तक कि आपको एक प्रॉपर घर नहीं मिलता
the organization, the R&D unit, gives its employees studio apartment, which are pretty small spaces. So what wrong regret did is he requested his sister, "Yeah, please have a parents with you." But as the months pass, of course, the sister is also trying her best, but cannot have the parents with her anymore. Very difficult to accommodate her parents as well as in-laws. So she has requested wrong, bro, please try to accommodate the parents back. तो बट नेचुरल रॉन्ग देखेगा कि यार मुझे घर कब मिलने वाला है, यार ही स्टिल थर्ड इन द क्यू, क्वाइट अनफॉर्चुनेट, चिंता की बात हो गई ना. तो इट्स बिकम वेरी क्लियर दैट ही माइट नॉट गेट अ हाउस अलॉटेड इन द नियर फ्यूचर. इतने सारे महीने हो गए, अभी भी वो थर्ड पे है. पहले तो 1-2 को मिलेगा, फिर उसके बाद उसका नंबर कब लगेगा. तो इन डेस्परेशन ही अप्रोचेस द सीएओ टू बी मूव्ड अप द क्यू on humanitarian grounds. This is very, very fair enough. Once again, he is asking for help, not for his own preference, not for his own luxury, but because of उसके पेरेंट्स का सिचुएशन. और ऐसा भी नहीं है that parents are ill and hearty, they are ailing, they must be pretty old, suffering from some illness. Now what is the goal before you? सीएओ क्या कर सकता है as an action that is most appropriate by all the stakeholders. Now in this situation, pause for a moment and determine who are the stakeholders. First of all, the organization itself, first का उसका जो भी पॉलिसी है, तो ठीक है. The organization itself, it is the stakeholder. ठीक है. The CAO guy is of course being the decision maker, but naturally wrong himself is. ठीक है, कि उसे घर चाहिए और वो बहुत लेजिट रिक्वेस्ट कर रहा है. इसके अंदर में अदर एम्प्लॉइज, अदर रेसिडेंट्स आर आल्सो स्टेक होल्डर्स. अदर रेसिडेंट्स, पीपल हु आर ऑलरेडी, बिकॉज आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि एग्जिस्टिंग कोई घर है जहाँ पे कोई फैमिली रह रही है, कोई एम्प्लॉय रहता है, यू किक देम आउट एंड गिव दैट हाउस टू रॉन्ग. यू कैन नॉट go by that situation, right? So you also have those people as the stakeholder, and of course people in the waiting list, the people who are the two guys or girls who are above row. ठीक है, तो इन सारे लोगों को आपको सेटिस्फाई करना, किसी के भी वायलेशन नहीं होना चाहिए, आपको बहुत खतरनाक रूल्स बेंड नहीं करने हैं, बट इतनी जो स्पेशल रिक्वेस्ट की गई है उसको भी फुलफिल करना है. तो ठीक है थोड़ा सा पेचीदा है प्रॉब्लम. लेट्स सी व्हाट द ऑप्शंस आर. ऑप्शन ए, ask wrong to meet the director or present his case to get an exception. Exception in what case? Being moved up the queue. अगर हुआ भी तो it is actually unfair to other waitlist guys. Maybe it is okay with the others, but these guys will not be happy. Secondly, सीएओ गाय अगर इतनी छोटी एक एक पर्टिकुलर केस खुद के बॉस के तरफ फॉरवर्ड करता जाए, तो भाई आपको बिठाए क्यों वहां पे? व्हाट इज योर जॉब? सेटल ऑल दिस. द डायरेक्टर हैज फार मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू टेक केयर ऑफ. एक एक एम्प्लॉय के एक एक रेसिडेंशियल रिक्वेस्ट को अगर वो हैंडल करने लग जाए, तो देन दिस गाय इज यूजलेस, राइट? अगर सीएओ गाय proposes a solution which is fair enough, but that is not accepted by wrong, तो फिर बोला जा सकता है कि नहीं चलो अब तो आप प्लीज डायरेक्टर के पास ही जाओ, मैं कुछ नहीं करता. In that case that would have, but first resort cannot be the scene कि जा भाई मेरे बॉस के पास जा, देख लेना वो जो बोलता है वही कर. This is wrong, very unfair, and also ducking on your responsibility. So option A, I will kick it out very confidently. B, ask wrong to negotiate and arrive at a consensus with the two scientists ahead in the queue, which the CEO shall implement. भाई ये क्या है? ये तो मतलब भाई तुम आपस में सौदेबाजी कर यार, कोई डील नहीं हो रही है. ठीक है, दिस इज नॉट अ बिजनेस डील दैट इज. First of all, he is leaving wrong in the hands of in a very vulnerable situation, and he is leaving his future, or rather उसके parents का future काफी risky type situation. What if the other two guys turn out to be very hostile? What if they all also very pissed off, और या फिर उनके खुद के भी बहुत special requirements है, तो this will create a lot of workplace conflict potentially, and a lot of will leave a lot of bitter taste in the mouth of everyone. So option B is also quite unfair. As an intermediary, the CEO guy has to do something. ठीक है. Option C, inform wrong that nothing can be done since violation of rules will set a wrong precedence. Oops. Okay. This is very, very harsh. मतलब सीधा हाथ खड़े कर देना कि नहीं भाई तुम रिक्वेस्ट तो कर रहे हो, मैं नहीं करने वाला कुछ, क्योंकि रूल बुक इज रूल. आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. ही हैज रिक्वेस्टेड. और ऐसा भी नहीं है कि रॉन्ग जिद करके मनमानी कर रहा है बच्चे जैसे कि अभी के अभी मेरा कर. ही हैज लिटरली ट्राइड फॉर मंथ्स to have something alternative work out in the hope that the queue might move and
शायद घर मिल जाए तुम तक, बट बिकॉज दैट हैज नॉट हैपेंड एंड दैट इज व्हाई ही हैज अप्रोच्ड द एडमिनिस्ट्रेटर। इट्स नॉट लाइक कि रॉन्ग हैज जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन और डे वन से उसके डिमांड और टैंट्रम शुरू हो गए। सो रॉन्ग इज एक्चुअली नॉट रॉन्ग इन okay, sorry for the very badly placed pun. Wrong is actually not unfair, not illegitimate in his request. So option C, which is very very harsh with wrong and even more so his parents, is actually not good. Okay. D, facilitate wrong in getting a house in the city along with a free commutation for the first 3 months. All right, this is okay. First read पे might sound a bit off the mark क्योंकि this involves a bit of preferential treatment कि आप उसको free travel दे रहे हो, ठीक है, वो भी 3 महीने तक के, and also asking the guy to move out to a place in the city somewhere, and it is also not clear कि what is meant by facilitate here. So when we mean facilitate, does it simply mean कि आप उसको connect कर दे रहे हो relevant लोगों के साथ में, maybe brokers और maybe landlord जो शायद rent पे घर दे दे कुछ time के लिए, या फिर आर यू एक्चुअली पिचिंग इन विद सम काइंड ऑफ रेंट, सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा होम अलाउंस और समथिंग, वो वाला एक पार्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं है। बट गोइंग बाय एबीसी, एटलीस्ट एबीसी के सामने डी फेयरली रीजनेबल है। यू आर नॉट डिस्टर्बिंग द वेट लिस्ट, यू आर नॉट डिस्टर्बिंग द अदर रेसिडेंट्स एंड यू आर गिविंग अ डिसेंट प्लेस टू स्टे टू रॉन्ग फॉर हिज पेरेंट्स। इसमें देखा जाए तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है रॉन्ग को कि भाई आपको हर रोज कम्यूट करना है फ्रॉम द सिटी टू द कैंपस फॉर द जॉब। तो उसमें भी मतलब एक एक रिलीफ दी जा रही है कि चलो ठीक है, पैसे नहीं लगेंगे आपको कम्यूट के, टाइम जाएगा बट ठीक है यार, कहीं ना कहीं भी कोई तो चीज छोड़नी पड़ेगी ना। सौदेबाजी में, समझौते में ये तो कुछ ना कुछ करना ही होता है। एवरीवन कांट हैव एवरीथिंग। So D is fairly okay right now. At least it is not in violation of any rule book. It is not in violation of any ethics as such. E is horrible. E में है बहुत ज्यादा रूल बुक का बेंडिंग. It is also very unfair to this other waitlisted guys. What does it say? He make wrong to the top of the queue, move him to the top of the queue, and make a rule that scientists with ailing parents shall be given preference. This is setting such a wrong precedence. Very, very horrible. This opens up a Pandora's box with potentially people next in the list faking some kind of illness, either of themselves or of their family dependents, whatever. So this will actually set up a very, very, very wrong example. So option E has to be rejected on priority. ठीक है, तो ऑप्शन ई को आप रिजेक्ट कर दो. ऑप्शन डी को वी विल हैव टू गो अहेड विद इट, ऑल्दो इट एंड्स अप इंप्लाइंग कि फर्स्का को थोड़ा सा ज्यादा खर्चा लगेगा फॉर वन पर्टिकुलर एम्प्लॉय, बट एटलीस्ट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इट इज ओके. और अगर उससे ज्यादा समय लगता है घर खाली करने में, तो फिर ऑफकोर्स उसके बाद तो रॉन्ग को कम्यूट का खर्चा भी खुद ही देना है. तो ठीक है, ठीक है, ऑल्दो डी इज नॉट कंप्लीटली क्लियर इन इट्स स्कोप, बट एटलीस्ट इट इज मच मच बेटर देन द अदर फोर ऑप्शंस. ओके, so now let's go to the next question. If any doubt, let me know. Third question, this is also very straightforward, fairly straightforward like the first one. क्या दिया है कि 3 सीरीज हाउसेस जो है, तो जो हाउस नंबर है ना 324, 325, वो वाली रेंज के लोग, दे आर रिक्वेस्टिंग कि नहीं यार हमको दूसरे रोज में, दूसरे सीरीज में अकोमोडेट करो, 100 वाली, 200 वाली, मे बी 400 if there is one, I don't know. And the administrator guy is very much aware कि क्यों आ रही है रिक्वेस्ट, because of their own noisy factory which is very close by. Maybe the layout of the campus is such that कि 3 सीरीज में बहुत ज्यादा आवाज जाती है, 1 सीरीज एंड 2 सीरीज में शायद ना जाती है. So the root cause of the problem has also been identified and it's not like कि कोई आउट ऑफ कंट्रोल फैक्टर है या फिर एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया जा सके. फैक्ट्री है उन्हीं लोगों की है और उनके ही लोगों को दिक्कत जा रही है, तो कहीं ना कहीं सम सोल्यूशन कैन बी फाउंड आउट. Now, what is the problem at hand? What are the constraints? The constraints are that limited housing space है and future में और गड़बड़ तैयार नहीं करती है. अभी तो चलो 2, 4, 5 लोगों ने शायद रिक्वेस्ट किया होगा कि यार प्लीज ट्रांसफर अस, तो द सीईओ गाय क्वाइटली मे बी इज शिफ्टिंग देम टू 1 सीरीज, 2 सीरीज, और न्यू लोगों को शायद 3 सीरीज दे दिया जा रहा है. बट डेफिनेटली आज नहीं कल ये एक बड़ा सा प्रॉब्लम बन सकता है and he has to find something. He wants to find a solution which is fair to the 3 सीरीज वाले रेसिडेंट्स. एकदम सही बात है, करना तो पड़ेगा ना, आज नहीं कल. यू कैन नॉट हैव अ सिचुएशन वेयर यू आर जस्ट लेटिंग दिस स्लाइड and just processing the transfer request as and when they come on an ad hoc basis. Not cool, not cool. ठीक है, तो वही क्वेश्चन है कि which of the following actions can best help the CAO in achieving his goal. So let's see. Okay, option A and B are very horrible in the sense कि
आप निकालने की कोशिश कर रहे हो एक तो ऑप्शन बी में लोगों को कि अच्छा नहीं नहीं चलो ये लो एक्स्ट्रा पैसे, छोड़ो ये जगह, जाओ शहर में कहीं तो भी रहो। अरे ये ठीक बात नहीं है यार। मतलब प्रॉब्लम इज समथिंग जो उन्हीं के फैक्ट्री की वजह से हो रही है। द एम्प्लॉयज आर लेजिट इन देयर कंप्लेंट्स। यू कैनॉट हैव अ सिचुएशन वेयर यू सिंपली नज देम कि चलो छोड़ो छोड़ो जगह छोड़ो। सीईओ वुड बी बिहेविंग लाइक अ वेरी अनकाइंड लैंडलॉर्ड इफ ही ट्राइज डूइंग दिस। Another in option A, provide 3 series residents with a hardship allowance of 15% of basic salary. But that is still not solving the problem ना। आप उनको 10-15% पैसे ज्यादा दो, आवाज तो फिर भी है, उनको डिस्कम्फर्ट तो अभी भी है। तो ऑप्शन ए इज हॉरिबल इन द सेंस कि ही इज ब्लीडिंग मनी, सीईओ इज मेकिंग फर्स्ट का लूज सम मनी, एक्स्ट्रा मनी ऑन द एम्प्लॉइज, एंड द प्रॉब्लम इज स्टिल प्रेजेंट। इससे अच्छा तो अगर आपको पैसा खर्च करना ही है तो यार कहीं ऐसी जगह लगाओ जिससे शायद वो नॉइस का चीज चला जाए। ओके, maybe put in some kind of silencer in the factory itself or maybe install something infrastructure on the house end। वो तो भी एक बार का जम जाएगा। it involves spending money but at least the problem will be solved। in option A and B the problem is not getting solved। okay, it's not even a band-aid on the it's something completely random। so A and B are equally disappointing। C, introduce a policy of accelerated promotion for junior scientists जो 3 series quarter में रह रहे। this is like absolute bullshit man। कि अच्छा आप जूनियर साइंटिस्ट हो, अच्छा जी बहुत आवाज है आपके घर में, बेटा आपका प्रमोशन ना मैं जल्दी करूंगा, तुम बहुत पीड़ा सहन कर रहे हो जिंदगी में। व्हाट व्हाट द एफ, ये क्या बात हुई भाई। और चलो एक बार का एक्सेप्ट कर भी ले, व्हाई ओनली फॉर जूनियर साइंटिस्ट। व्हाट इफ देयर इज अ चीफ साइंटिस्ट लिविंग इन द 3 सीरीज रो, ये नहीं चिल्लाएगा कि भाई मैंने कौन से पाप कर दिए, मैं तो हायरार्की में भी ऊपर हूँ, मैं ज्यादा वीआईपी इंसान हूँ इस कंपनी के लिए, एंड आई एम मेड टू सफर दिस नॉइजी हाउस फॉर नो रीजन एट ऑल। तो ऑप्शन सी laughable actually। okay, D, appeal to the top management to make the factory work for only 5 days a week। oops, very bad once again। आवाज हो रही है एक्सेप्टेड, बट यार 6-7 दिन मत चलाओ ऑपरेशन, 5 ही दिन चलाओ, 2 दिन तो शांति रहने दो हमारे एम्प्लॉय। एक बार का चलो सोच भी ले कि 2 दिन आवाज नहीं, बट बचे हुए 5 दिन तो आवाज है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी देयर राइट, एंड आई एम अज्यूमिंग कि एटलीस्ट एक तो ऑफ डे रहता होगा फैक्ट्री में। तो एट मैक्स देयर इज ओनली गोइंग टू बी 6 वर्किंग डेज, आउट ऑफ विच एक दिन अगर समझ लो आप बंद भी रखते हो फैक्ट्री एक्स्ट्रा, और स्टिल व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 5 days द प्रॉब्लम इज स्टिल प्रेवेलेंट। द अपर मैनेजमेंट विल लाफ एट द सीईओ गए कि भाई कुछ भी, मतलब लिटरली कुछ भी क्या। तो बचता क्या है, ऑप्शन ई विच इज लेजिट, इंस्टॉल एक्सपेंसिव साउंड प्रूफ विंडोज इन द 3 सीरीज क्वार्टर्स। एक्सेलेंट। पैसा खर्च हो रहा है, आई नो एक्सपेंसिव वाला टैग might some serve as some kind of a dissuading point or something which might be putting you off, but please compare it with the other option। ऑप्शन ए और बी में तो पैसा खर्च हो भी रहा है, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है। ऑप्शन ई एटलीस्ट पैसा खर्च करके प्रॉब्लम तो सॉल्व करके दे रहा है आपको कि ठीक है आवाज होती रहेगी, फैक्ट्री इज नॉट चेंजिंग इन एनी एस्पेक्ट, बट लोगों को तकलीफ नहीं। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन with only some kind of additional fund flow going out from the institute, from the R&D unit। इट्स ओके, चलता है, ये सब चीजें तो करनी ही होगी। कल जाके कोई घर में अगर क्रैक आ गई, वो गिरने में आ गया उसकी कोई 1-2 दीवार, क्या उसको रिपेयर नहीं करेंगे, क्या उसमें पैसा नहीं लगाएगा या R&D? डेफिनेटली लगाएगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ लेजिटिमेट प्रॉब्लम जिसके तरफ पैसा तो खर्च करना ही पड़ता है। ठीक है, अनफेयर रिक्वेस्ट कब होती है खर्चे की, इफ देर इज सम गाय हु इज रिक्वेस्टिंग, हु इज डिमांडिंग कि भाई मेरे घर के ऊपर एक और मंजिला आप ऐड कर दो, उसके लिए आप पैसे खर्च करो, आई नीड वन मोर फ्लोर इन द हाउस, नो बॉस नॉट हैपनिंग। ठीक है, so this is how you go about solving such situations where you are trying to do justice to the problem at hand and to all the stakeholders। okay, so I hope that you understood this set and got all the 3 questions correct। if you like the content, please hit the like, share and subscribe button, and I hope that your prep is going on really well। the time that I'm uploading this video, that exam is extremely close, so wish you all the very best from uh, on my from my end, and I hope that you do really well in the exam। all right, so chalo, I'll see you in the next video, tata, bye bye, and